फौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है या मातहत है हुकूमत के? मातहत है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मातहत है ना, तो उसका सरबराह कौन होता है हुकूमत का? प्रेसिडेंट सरबराह नहीं होता है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो उसकी वो अख्तियारात बहुत ही कम हैं, वो तो सब एडवाइस पे चलता है प्राइम मिनिस्टर की। तो कौन होता है, किसकी मातहत होते हैं? जाहिर है आइन के तहत होता है, फेडरल गवर्नमेंट के तहत होती है मातहत अंडर आर्टिकल 240। भाई किसकी मातहत होता है? भाई कौन अपॉइंट करता है लोगों को, किसके तहत मातहत होते हैं? ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट तो एक शख्स नहीं है ना जी। शख्स क्या, ओहदा क्या? कैबिनेट भी शख्स नहीं है। कंसिस्ट अपॉन कैबिनेट कंसिस्ट अपॉन नेचुरली प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग दैट कैबिनेट व्हिच अपॉइंट्स द। ठीक है, अगर तो अब ये बातें हो रही हैं, या तो आप कहें कि जी ये लोग सब रोग थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, तो फिर जो बेनिफिशियरी की बात आप दूर कैसे रख सकते हैं? आप उनसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आप शायद इस पहलू को देखा नहीं। जब आप हमारे पास आएंगे फिर हम आइन और कानून पे चलेंगे, फिर ये नहीं होगा कि मुझे ये करके दे दें और मुझे वो करके दे दें, फिर हम आपको शायद पूरा करके दे देंगे। हामिद खान साहब जी, लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी सलाउद्दीन साहब से पूछ रहा हूँ। सलाउद्दीन साहब, आपकी क्या राय है इस मामले में? My lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if no, hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? It's Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, and if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi Islamabad. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done
without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is, no, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case? तो किसको फायदा पहुंचा है? So basically they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice? फायदा ये नुकसान का जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है कि उनके सामने तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है. Apart from this is one of the examples where things have become very apparent on the face of it, which otherwise people suspect. इसमें जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 सफ़े अगर मुझे इजाज़त है मैं पढ़ दूँ. From the additional reply that he has made, in which he was specific about who was doing what. देखिए अब आपको मैं क्या वजाहत करूँ. माशाल्लाह आप कई दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं या इलेक्शन के प्रोसेस में तो रहे हैं. अपने इदारों की बात कर लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, ठीक है, अगर एक तरफ कोई कुछ करे एक शख्स को बाहर रखने के लिए, वो इसीलिए करेगी ना कि उसका पसंदीदा कैंडिडेट जीत जाए, और तो कोई नतीजा नहीं होता है. या तो वो उसका जहनी तमाजुन ठीक नहीं है तो वो फिर अलग बात है, ठीक है. तो जब ये सारे लोग जब ये कार्रवाई कर रहे थे तो फिर बेनिफिशियल बात नहीं समझ. देखें ये उन्होंने एक हामिद खान साहब या बहस कर लें या जब तक हम किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मशावरत बेशक कर लें, हमसे डायरेक्ट मुखातिब ना मुनासिब नहीं लगता है ना. आप मशावरत कर लें, आप करें मशावरत कर दें. गुजारिश ये थी कि लेट देयर रिस्पॉन्स कम, क्योंकि कल भी यही बात हुई थी. देखिए तो इसका मतलब है कि मैं आधी बात करूंगा, पूरी बात नहीं करूंगा, या फिर पूरी बात कहें या फिर ना बात करें. नहीं, पूरी बात. देखें ये बात नहीं हो सकती है कि आप इस सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से चलाएंगे. आप आ गए, हमने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए. अब मर्जी चलेगी हमारी. अगर आप सच पे जाना चाहते हैं तो चलिए, सच की तरफ बढ़िए. किसी वक्त तो कर लेना पाकिस्तान में सच की बात, या फिर हट जाइए, या फिर क्या मैं नहीं करना चाहता हूँ. ये तो नहीं कि जी अब ये ऐसी बात है आप इनको कह दे इसने गलत लिख दिया ऑर्डर. भाई साइन मैंने किया ना, या नुकसान मैंने किया, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है अगर उसने कोई और काम किया हो. तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि अच्छा जी, अच्छा वो अगर आपने उनको बुला लिया, अगर उन्होंने कह दिया हमने तो इसके कहने पे किया, फिर या तो उसको खुद कहना दिया इनको फायदा हो गया, वो बात आप कर नहीं रहे. उनको बुला लिया अगर उन्होंने कह दी है तो कोई वजह होती है ना करने के लिए, या ऐसी बस चलो आज हम शरारत करते हैं. वो तो स्कूलों में होता है, बच्चे कि इसको जरा तंग कर दो, उसको तंग कर दो. सर 70 तो मेरे ख्याल में ये इतने सीनियर लोग बिला वजह तो शरारतें नहीं करेंगे ना कि चलो आज ये हम शरारत करते हैं. तो जब अगर ऐसी बात है तो इसीलिए हमने जरा ये बात नहीं हो सकती है कि आप एक फर्द वाहिद का केस ले आए और कहें जी बाकी कोई चीज ना देखें. अगर आपने ये किया तो इसीलिए हमने जरा ये बात नहीं हो सकती है कि आप एक फर्द वाहिद का केस ले आए और कहें जी बाकी कोई चीज ना देखें. अगर आपने ये किया तो फिर ये बहुत बड़ा हमला हुआ आईन पे, जमहूरियत पे. सुनते रहिए, बिल्कुल सही. आईन पे, जमहूरियत पे और अदलिया पे.
اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جی تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں, ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں, یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا